Gamma decay is nothing but high energetic electromagnetic radiation. Okay. So, and we also know that electromagnetic radiation is originate when you have a charged particle is accelerated, or when you will have oscillating charge, then it will emit EM radiation. And same is true for the gamma decay also. Inside nucleus, a charge is actually time varying because proton is converting to neutron, neutron is converting to proton, and so on. When you have a charge varying, when you have a time varying charge, that you can express in terms of time varying electrical multiple, and that electrical multiple that is actually oscillating or varying with time. Suppose you have a dipole oscillation or quadrupole oscillation and so on, that will emit radiation, and in nuclear physics it is called gamma ray. And you have a inside nucleus also there is a time varying current, and that you can express in terms of time varying magnetic field, and time varying magnetic field can also emit radiation. Okay, that is the cause of gamma decay in nucleus, inside nucleus. And if you remember, we have given that notation. You have a two state. Okay, suppose is the excited state I Z A star ion, or I'll use E I and EF. So nucleus is at excited state EI, is coming to ground state. That is I Z A. Okay, by the emission of gamma. And I'll assume that angular momentum of this gamma is, or photon is L. The spin of nucleus at excited state, that is Ji, and parity is phi I. And for this state, or at final state or ground state, that will be the spin of nucleus is Jf with parity phi f, and I have parity of photon, emitted photon or gamma ray, that is pi. And we have noticed, we have discussed all these things, but we have noticed that from that angular momentum conservation, I'll have Ji equals to what? Jf plus L, right? ठीक है ना? So यहाँ से I can write the angular momentum carried out by emitted photon, that is gamma ray in nuclear physics, that will be Ji minus of Jf. And that L, or sorry, total angular momentum of emitted photon or gamma ray, that can take values that will be greater than equals to क्या होती है? mod of Ji minus Jf to Ji plus Jf, right? And from parity conservation, I can write that pi I, initial state parity, should be equals to final state parity into the parity of emitted photon. Okay. That was we have discussed. And finally क्या देखे थे? If you have remembered, if there is a change in parity, if there is a change in parity of nucleus in the initial and final state, then the cause of gamma ray radiation will be due to what? Eon, that is known as electric dipole oscillation, then M2 magnetic quadrupole oscillation, E3 electric octapole oscillation, and so on. ठीक है ना? And if there is no change in parity of initial and final state, I mean excited state and ground state of daughter nucleus, then the cause of gamma ray will be magnetic dipole oscillation, electric quadrupole oscillation, then magnetic octapole oscillation, and so on.
ठीक है ना, that we have discussed. So let us solve 2 or 3 problems, then we'll go to the nuclear model. We'll discuss that nuclear model, then finally we'll discuss that nuclear detector, because nowadays in the competitive exam question is asking from where that nuclear detector also. ठीक है ना, so we'll discuss one by one. स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? सर अभी विजिबल है सर. विजिबल है, ओके. यस सर. Okay, so we'll discuss that nuclear detector and nuclear reactor also. That is also important, because if you don't know, the application of nuclear physics is like a nuclear detector, or I mean nuclear reactor, right? How will you use that nuclear energy as a green energy source and so on. So that we'll discuss. Okay, so फिर अभी हम एक दो प्रॉब्लम करते हैं, फिर हम चलते हैं. Suppose at excited state the nuclear spin is 2 with parity even. It's coming to ground state, and ground state is having spin 0 with even parity. Now can you tell me what will be the cause of gamma ray radiation? कौन कौन रेडिएशन यहाँ पे डोमिनेंट होगी? कौन कौन सा गामा रे, कौन कौन सा? सर पैरिटी चेंज नहीं हो रहा है ना, तो हाँ, parity सर change. E1 M1 E3. 4 M1 M3. So first of all, that ion that will be decided by कितना आएगी, वो डिसाइड करेगा L का वैल्यूज. L का वैल्यूज क्या होगी यहाँ पे? L का वैल्यूज JF2 JI mod of JI minus JF2 mod of JI plus JF, तो एक ही वैल्यू आएगी, राइट? E2. There is only one value possible for there is only one L value possible for this, right? आप mod of JI minus JF करोगे तब भी आपको 2 मिलेगा, JI plus JF तब भी 2 मिलेगा. It means you will have only on L values, है ना? तो there is no change in parity, तो फिर क्या मिलेगा आपको, किसके लिए आप? हाँ, E2. E2 means what? E2 means what? Quadrupole. Electric quadrupole. ठीक है ना? The second case, suppose initial or at excited state nuclear spin is 2 and parity is even, it's coming to ground state with spin on and parity even. Now we have to find out that cause of gamma ray radiation. So कौन कौन यहाँ पे आएगी, बताओ? 1, 2, 3. So L can be 2 minus on, that is on to 2 plus on, that is 3. So on to 3 exactly. There is no change in parity, है ना? तो जब parity का कोई change नहीं होती है तो फिर क्या होती है आपका? Even वाला E होती है, right? So you'll have M on, E2 and M3. ठीक है ना? Next you have third. Suppose it is given in the ground state you have spin on by 2 going to, sorry, in the excited state you have a spin that is half and parity is odd. Going to ground state, spin 2 and parity even. So I have to find that cause of gamma ray radiation. कौन कौन यहाँ पे आएगी? So first you calculate L value. L क्या क्या हो सकती है यहाँ पे? 3 by 2 minus 1 and 2. on, and you will have 2, and there is a change in parity here. Change in parity में इलेक्ट्रिक कौन कौन सा आती है? When there is a change in parity in the excited state and ground state, so that cause of electric E1 and M2. exactly. So you will have E1 and M2 are responsible for gamma ray radiation in this case. In this case,
M1, E2 and E3 are responsible. यहाँ पे E2 is responsible. अब बताओ इनमें से सपोज मान लो यहाँ मैं पूछ रहा हूँ कौन सा सबसे ज्यादा इंटेंसिटी देगी M1, E2 और M3? तो यहाँ पे गामा रे जो रेडिएशन होगी दैट इज बिकॉज ऑफ magnetic dipole oscillation, electric quadrupole oscillation and magnetic octopole oscillation. बट किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहेगी, किसका कारण इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी? M1. एग्जैक्ट, हाँ M1 के कारण देन E2 देन M3. ओके so this is your gamma ray radiation. Now we'll discuss actually हम डिस्कस करते हैं बेसिकली पहले हम मॉडल को डिस्कस करते हैं बट वी हैव ए जैम स्टूडेंट सो फर्स्ट वी हैव कवर दैट जो कॉमन टॉपिक है उसको कवर करने के लिए हम उसको छोड़ देते हैं. नाउ विल डिस्कस दैट model, nuclear model. You have a liquid drop model, then cell model, then Fermi gas model, collective model. We'll discuss that and then we'll go to that final topic, that is your nuclear detector and nuclear reactor. Okay, so first in nuclear model, you will have first model, that is I'm going to discuss, that is liquid drop model. So, Aji? I have a doubt. This nuclear model is basically a new chapter, no? Exactly, it's a new chapter. Okay. Aji. So liquid drop model first to discuss. Okay. So what is the significance of liquid drop model? Anyone can tell me? So first, in this liquid drop model, what you are this term itself is saying that you have a liquid drop. You have a liquid drop. So in liquid drop model, the nucleus is compared with liquid drop. The nucleus is compared with liquid drop. Inside liquid drop, आपका क्या होती है inside liquid drop? Inside liquid drop, you have a molecules, right? You have a molecules. So, Aji? sorry to interrupt, but this is also part of CSIR net. Exactly. I mean, I say very, very important for your CSR net. At least you will get question. You'll get a question either from liquid drop or cell model. So very, very important. आपको एक क्वेश्चन मिलेगी ही मिलेगी यहाँ से, है ना? शायद 3 या 4 लेक्चर्स होंगे, इसमें से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स सबका आएगा ही. ठीक है? Okay, sir. So, but when I have checked that chapter, the questions were basically from the magnetic moment value to calculate that part. So I got a bit confused and I asked about it. No, yes, magnetic moment you can calculate from that cell model. Huh? You have a, Okay. I must say that you have a liquid drop model. The application of liquid drop model, you can predict that nuclear fission or fusion process. You can predict nuclear fission or fusion process. You can calculate the binding energy of many nuclei with very high accuracy. You can also predict the most stable nucleus from a given isobaric family. ठीक है ना? So the application of liquid drop model, again I am repeating, you can mention also in first part. The application of liquid drop model, you can predict
the binding energy of many nuclei with very high accuracy. है ना? You can explain nuclear fission and nuclear fusion process or phenomena. ठीक है ना? You can also explain or you can also predict the most stable nucleus for a given isobaric family. The most stable nucleus for a given isobaric family. These are the application of liquid drop model. ठीक है ना? Yes, sir. Thank you. But what are the disadvantage of liquid drop model? Liquid drop model cannot predict the nuclear spin, nuclear parity, nuclear quadrupole moment, nuclear magnetic moment, magic number. This cannot be explained from liquid drop model. That can be explained from cell model. है ना? तो हर एक मॉडल का एक एडवांटेज भी होती है, एक डिसएडवांटेज भी है. Similarly, cell model का भी disadvantage है. When I'll go there, I'll tell you. ठीक है ना? So liquid drop model can explain how you can calculate binding energy of many nuclei with high accuracy. It can explain nuclear fusion process. It can also predict the most stable nucleus for a given isobaric family, but it cannot explain or cannot predict the nuclear quadrupole moment, nuclear magnetic moment, nuclear spin, nuclear parity. Magic number cannot be explained from liquid model. For that, you have to go to cell model. Okay, but both are equally important for your net exam. So in this liquid drop model, nucleus is compared with liquid drop. And inside liquid, you know, there are many. If I take, suppose your water drop, water is a liquid, right? Inside water, you have a H2 molecule. So what I can say that liquid, inside liquid, you have a many molecules. You have a many molecules. Similarly, inside nucleon and inside nucleus के अंदर क्या होती है? Nucleons. Exactly. You have a nucleons. You have a nucleons. So nucleus is compared with liquid drop. Nucleons is compared with molecules, and molecules are held together. Molecules are held together by a force, and that is called what? That is called cohesive force. That is called cohesive force. And nucleons are held together by what force? That is your nuclear force. So there is a one-to-one correspondence. Nucleus can be compared with liquid drops. Nucleons can compare with molecules, and nuclear force can be compared with cohesive. So liquid drop is stable because of cohesive force acting between molecules, and that causes their holding together. Similarly, nucleus is stable because of nuclear force that is acting between the nucleons. As a result, that nucleus is stable. ठीक है ना? ठीक है ना? Yes, sir. Okay. In a liquid drop, that is called semi-empirical mass formula. Semi-empirical mass formula. In a liquid drop has semi-empirical mass formula. According to semi-empirical mass formula, mass of a nucleus can be expressed as Z into MP plus A minus Z into Mn minus binding energy per C square. Now they have defined the binding energy. They have defined the binding energy
they have defined the binding energy, and in binding energy you have a term like AV into A. AV into A minus AS a the power 2/3 minus AC Z square divided by a की power 1/3 minus A minus 2Z का square divided by A, and then you'll have a delta. So according to semi-empirical mass formula, so in liquid drop model you have a semi-empirical mass formula. Right side is not visible. Aji, The not right visible. side is visible. Yes. Which part? This part. That cone cut now. इतना दिख रहा है? Delta part. 1 minute. I can see also. So like you have a minus 2Z का square divided by A, and then you'll have a delta. Then you'll have a delta. Okay. So in a liquid drop model, the nuclear mass can be defined as that, you know, right? Predicted mass, this is the predicted mass minus binding energy per c square. Huh? Now they have defined that binding energy. They have defined the binding energy, and they basically, in binding energy, they have basically 5 terms. So, na, first term is basically called, this term is basically called what? This So term volume energy term. this is called volume energy term. ठीक है ना? So basically, what they are trying to calculate, they are trying to calculate the mass of a nucleus, है ना? Mass of a nucleus, है ना? And the mass of a nucleus, this formula we have calculated. But in in liquid drop model, what is the new thing? The new thing that binding energy, they have defined the binding energy like this. They have defined the binding energy like this. They have basically discovered 5 terms. So first term is basically called, this is your volume energy term. So first they have calculated, they have predicted that volume energy term, and they try to substitute this volume energy term here, and they are trying to calculate that nuclear mass. But nuclear mass was actually not matching with experimental value. So they tried first, पहले क्या किया है ना? Nuclear mass can be written like this. In liquid drop model, they have defined the binding energy of a nucleus. So first क्या ये वाला term को discover किया गया है, AV into A, and that is called your volume energy term. So first binding energy they have defined like this, and they substituted these values here. Then they got that nuclear mass, but that nuclear mass was not matching with the experimental value. Then they discovered second term. So they combined first term and second term, and they substitute this binding energy here. Again they are trying to calculate the nuclear mass. ठीक है ना? तो जब ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था यहाँ पे, तो जो न्यूक्लियर मास मिल रहा था, है ना, from theoretical calculation, that was smaller than the experimental value. Then this term they discover. So you have 2 terms now. They substitute this 2 term here. Again they have calculated the nuclear mass. Again the obtained theoretical nuclear mass was not matching with experimental result, and is actually smaller than the experimental result. Okay, then they discover third term, है ना? तो ऐसा नहीं है, कोई correlation नहीं है ना? Logic ये क्या है? There is no actually strong mathematics. ये जो term discover हुआ है, this term they have discovered one by one. First they have discovered this, it was not matching with experimental result. Then they have discovered this term. They put this, again they are not getting exact nuclear mass with experimental values. Then they discover this term, and they substitute this binding energy. So इस वे में ये टर्म को डिस्कवर किया गया है ना? बट इसका कोई स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल कोई मैथमेटिक्स नहीं है ना, इसका कोई स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स नहीं है कि ये टर्म आएगा ना. इसका एक लॉजिक है, हर एक टर्म के पीछे एक लॉजिक है ना?
इस टर्म के पीछे कुछ और लॉजिक है, इस टर्म के पीछे कुछ और लॉजिक है, इनके पीछे कुछ और लॉजिक है ना। एक टर्म दूसरे टर्म से कोई कनेक्शन नहीं है ना। तो देयर इज नो बेसिकली स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल बैकग्राउंड इन दिस मॉडल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला। सेमी इंपिरिकल का मतलब क्या हुआ? हाँ, इंपिरिकल का मतलब क्या है? मतलब सर जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करके देखा गया हो, बनाया गया हो। हाँ, इंपिरिकल का मतलब है कोई स्ट्रॉन्ग, कोई इंपिरिकल का मतलब क्या है? कोई जब कोई थ्योरेटिकल कुछ डेरिवेशन नहीं होता है, कोई फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला है बट इट हैज नो डेरिवेशन, बट दैट फॉर्मूला व्हाटएवर रिजल्ट इज इट इज गिविंग, that formula whatever result it is giving that is perfectly matching with experimental result। जब कोई फॉर्मूला का आपका कोई डेरिवेशन नहीं होती है मैथमेटिकल, उसको हम क्या बोलते हैं? इंपिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। और सेमी इंपिरिकल का मतलब क्या हुआ? कि आधा अधूरा डेरिवेशन है, कोई कॉम्पैक्ट डेरिवेशन नहीं है। इस टर्म का मतलब आधा आधा, सारे हर एक का क्या है? आधा अधूरा डेरिवेशन है, कोई स्ट्रॉन्ग कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है। इनफैक्ट इनका डेरिवेशन इस टर्म का डेरिवेशन से कोई लिंक नहीं है। समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. ये स्मॉल एस ए सी ये क्या है? ये आपका है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखो, आपका ये आपका वॉल्यूम टर्म है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ए भी, ए सबस्क्रिप्ट भी, इसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम कोफिशिएंट। तो इस टर्म को तो पहले आप लिख लो, आपका क्या है? आपका वॉल्यूम एनर्जी टर्म, इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम एनर्जी टर्म, वॉल्यूम एनर्जी टर्म, ठीक है ना। दूसरा टर्म क्या है? सरफेस एनर्जी टर्म। एस क्या है? सरफेस एनर्जी कोफिशिएंट है। तीसरा टर्म क्या है? कूलॉम एनर्जी टर्म। एसी क्या है? कूलॉम कोफिशिएंट है। चौथा जो है आपका, इसको बोलते हैं हम एसिमेट्रिक एनर्जी टर्म, है ना। इसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये आपका एसिमेट्रिक एनर्जी टर्म, जहां पे इसको क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक कोफिशिएंट है। और लास्ट वाला जो है आपका पेयरिंग टर्म है ना। और पेयरिंग टर्म का जो होती है, इसका वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे आपका पेयरिंग टर्म डेल्टा है, इसका वैल्यू होती है 0 जब आपका कब है? जब आपका ऑड ऑड केस है। ऑड ऑड केस मतलब ऑड नंबर ऑफ जेड एंड ऑड हाँ सर, ऑड में तो नेगेटिव हो जाता है। ऑड इवन है, ऑड इवन है, ऑड इवन या इवन ऑड है। हाँ पुनीत, यू आर करेक्ट, है ना। आपका ऑड इवन कॉम्बिनेशन में पेयरिंग टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। देन दिस विल बी माइनस AP डिवाइड बाय A की पावर 3/4 फॉर व्हाट? दिस इज फॉर ऑड ऑड कॉम्बिनेशन, this is for odd odd combination, and this term will be plus AP divided by A की पावर 3/4, ठीक है ना। और ये आपका क्या है? फॉर इवन इवन कॉम्बिनेशन। सो इसमें नया की क्या है? इस मॉडल में अगर आपको पूछा जाए नया क्या है, जो बाइंडिंग, ये तो आपको फॉर्मूला पहले हम लोगों ने डिस्कस किया। फॉर स्टेबल न्यूक्लियर यू हैव दैट न्यूक्लियर मास विल बी लाइक दिस, but they have defined a binding energy, they discover 5 terms। और ये 5 terms एक साथ नहीं आया। First of all they discovered this term, they tried to calculate nuclear mass, it was not experimentally matching, then they have calculated, they predicted this term, again it was not matching, then they predicted this term and so on। जब इस term तक आया है then it was matching with experimental result, है ना। एक्चुअली डेल्टा क्या है? जब आपका डेल्टा, जैसे आपका डेल्टा का वैल्यू 0 है ना। डेल्टा का वैल्यू 0 मतलब क्या है? ये 4 टर्म में से जो आपका न्यूक्लियर मास मिलेगी, और कौन सा कॉम्बिनेशन में? ऑड इवन या इवन ऑड, यानी आपका क्या है? जब आपका मास नंबर क्या होनी चाहिए? इसके लिए मास नंबर क्या होनी चाहिए? ऑड इवन इवन ऑड में मास नंबर क्या होनी चाहिए? हाँ सर। हाँ जी, हाँ सर, आपने क्वेश्चन क्या पूछा? थोड़ा मेरे इन पे नेट का प्रॉब्लम था। हाँ मैं कह रहा हूँ कि जब आपका ऑड इवन या इवन ऑड कॉम्बिनेशन है तो मास नंबर क्या होगी? ऑड ही होगा ना। Yes, Yes. हाँ, मास नंबर विल बी ऑड। तो पहले ये 4 टर्म डिस्कवर हुआ है, अब इसमें से बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट किया गया है।
बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया गया है, फिर न्यूक्लियर मास को कैलकुलेट किया गया है। तो जब आपका ऑड मास नंबर न्यूक्लियस है, जब आपका ऑड मास नंबर न्यूक्लियस है, तो ये चार टर्म को इंक्लूड करके जो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट किया गया है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आपको न्यूक्लियर मास मिला है, दैट वाज परफेक्टली मैचिंग विथ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ठीक है ना। बट जो आपका ऑर्डर्ड केस या इवन केस है, जो आपका ऑर्डर्ड केस है, उसमें क्या हो रहा था, जो आपका ऑर्डर्ड केस में न्यूक्लियर मास आपको क्या मिल रहा था, थोड़ा कम मिल रहा था। ऑर्डर्ड केस में न्यूक्लियर मास क्या हो रहा था, थोड़ा आपको कम मिल रहा था। देन दे डिफाइन दैट डेल्टा फॉर ऑर्डर्ड न्यूक्लियस लाइक दिस, है ना। फिर इवन केस में क्या हो रहा था, आपको जो यहाँ से जो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट, तो फिर क्या है, जो डेल्टा टर्म किसके लिए आया है, डेल्टा टर्म इसीलिए आया है, डेल्टा टर्म पहले तो आपका चार टर्म का डिस्कवर हुआ है, उसमें से बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करके न्यूक्लियर मास के फॉर्मूला में रखा गया है। तो जो आपका ऑड मास न्यूक्लियस का जो रिजल्ट है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है और थियोरेटिकल कैलकुलेशन है, वो परफेक्ट मैच हो रहा था। देन दे डिफाइन दैट लास्ट टर्म that is 0, pairing term is 0 for odd mass number of nucleus. बट जो आपका ऑड इवन या इवन ऑड केस है, ऑड इवन या इवन ऑड केस है, तो वहां क्या देखा गया है, इस चार टर्म में से जो बाइंडिंग एनर्जी आ रहा है और इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करोगे, तो जो आपको थियोरेटिकल कैलकुलेशन में न्यूक्लियर मास मिल रहा है, दैट इज स्मॉलर देन experimental result. Then what they have defined, they have subtracted some number from binding energy. And there is some logic also here, not like मतलब ऐसा नहीं है कि वैसे ही कर दिया, लॉजिक है, ठीक है ना। They have subtracted some number and that is pairing number and they have calculated in the binding energy and then substituted. उसके बाद जो न्यूक्लियर मास मिल रहा था, that was matching with experimental result. And when they have added this number for even case and they have calculated binding energy and substituted here, whatever mass nuclear mass they have obtained, that is perfectly matching with experimental result. तो ये टर्म एक एक करके डिस्कवर हुआ है, कहने का पर्पज यही है कि ये जो 5 टर्म है एक एक करके डिस्कवर हुआ है ना, टू फीड दैट रिजल्ट विथ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, दैट्स इट. And why it is called semi empirical mass formula? Because there is no strong mathematical calculation here. Has some logic for every term and there is no connection of one term with another term, है ना, कोई कनेक्शन नहीं है इनका, ठीक है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला टर्म है, दैट इज योर वॉल्यूम एनर्जी टर्म. वॉल्यूम एनर्जी टर्म, okay, and it's basically denoted by EV. Okay, so in volume energy term, it was experimental fact, you can mention it was experimental fact, that the volume energy of large number of nuclei, the volume energy of, ठीक है ना, it was experimental fact that volume energy को करो, कैंसिल करो, the binding energy of large number of nucleus, it was experimental fact that the binding energy of large number of nucleus is proportional to the volume of the nucleus, है ना. उनके पास लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस का डाटा था ना बाइंडिंग एनर्जी का, है ना. तो जो साइंटिस्ट थे ना, भी शेखर, उनके पास लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे बाइंडिंग एनर्जी का, ना. दे हैव लार्ज नंबर ऑफ binding energy result, they have binding energy result for large number of nucleus, experimental result, na. And what they have obtained, that
द बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम, है ना, जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसका बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे उनके पास। देन व्हाट दे हैव mathematically derived that EV, that is volume energy proportional to volume, ठीक ना। और जो वॉल्यूम होती है ना, वॉल्यूम मींस V, न्यूक्लियस इज हैविंग ऑलमोस्ट स्फेरिकल वॉल्यूम, I mean spherical shape, and for a sphere the volume is how much, 4/3 pi r cube, ठीक है ना, and r is nothing but r naught a the power 1/3, so 4/3 pi r naught a the power 1/3 की power cube. It means you have 4/3 pi r naught cube into a, ठीक है। So they have large number of experimental result or data for binding energy of large number of nucleus, no? So they have experimental data for large number of nucleus. They have noticed the binding energy depends upon volume, and volume I can write that volume is proportional to mass number. So if you substitute this volume here, then you will see that it will be 4/3 pi r naught cube into a, है ना? So this is your some constant. This is some constant, and a is variable. So they have defined that volume energy is some volume coefficient into mass number. So first they discovered this term. Okay. So it was experimental fact that the binding energy of large number of nucleus depends upon the volume or proportional to the volume. And volume is proportional to the mass number, because volume is for spherical shape, that is 4/3 pi r cube, and r you know, r naught to the power 1/3. So volume energy or binding energy. So first they have discovered that this term, that EV, that is volume energy or binding energy, they have defined same way, and they have obtained that will be AV into A. AV is called here volume coefficient, है ना? And that will be provided, that coefficient value that will be provided in exam. Okay, so first they have discovered this term as a binding energy of nucleus, and they substituted this binding energy in the mass formula, है ना? But they are getting whatever they are getting, that mass that is basically that is smaller than the experimental value. Then they discover second term, ठीक है ना? Then they discover second term. स्मॉलर या लार्जर सर, क्योंकि उसमें सब्ट्रैक्ट हो रही है टर्म। हाँ देखो, हाँ देखो, आपका मास जब लिख रहे हो आप, है ना, तो समथिंग प्लस समथिंग माइनस बाइंडिंग एनर्जी, राइट। तो अभी बाइंडिंग एनर्जी आपका क्या है, ज्यादा है। अभी आपका बाइंडिंग एनर्जी जब पहले टर्म करोगे, देखो पहले टर्म आपका बड़ा है, सबसे बड़ा पहले टर्म है, ज्यादा सबसे बड़ा है ना। फिर आप माइनस करते जा रहे हो, है ना, तो पहले टर्म सबसे ज्यादा है, मतलब जो न्यूक्लियर मास आ जाएगी कम आ जाएगी ना। पहले टर्म आपका क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सारे टर्म आपका क्या है, नेगेटिव में है। तो पहले टर्म मतलब आप जब पहले टर्म आपका सबसे ज्यादा वैल्यू है, बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा, मतलब न्यूक्लियर मास क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करोगे कम हो जाएगी। That will be smaller than the experimental result. So then they discover second term. It is actually good. अगर इस तरह की आपका confusion आएगी, that is very good actually. ये आनी चाहिए आपको। Second term, that is your surface energy term. Surface energy term, that is denoted by ES. Okay. To understand that, suppose you have a nucleus. अब इस न्यूक्लियस में कुछ न्यूक्लियस जो होगी आपका, दे विल बी ऑन द सरफेस, है ना। ये न्यूक्लियस का शेप जो होती है बेसिकली स्फेयर टाइप का होती है ना। आप स्फेरिकल बनाओगे इसको, सॉरी न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस विल हैव सम स्फेरिकल शेप। सो सपोज मान लो आपके पास एक न्यूक्लियस है, कुछ न्यूक्लियस जो होंगे सरफेस पे होंगे, और कुछ आपका कहाँ पे होगा, देयर विल बी कुछ न्यूक्लियस आपका that will be located
well inside the nucleus. So suppose you have a nucleus, so few of the nucleons will be on the surface of this nucleus and few of the nucleons will be well inside the volume of the nucleus, right? इनमें से कुछ न्यूक्लियंस कहाँ पे होगी, सरफेस पे होगी, और कुछ न्यूक्लियंस कहाँ पे होगी, वॉल्यूम पर होगी, राइट? अब ये बताओ जो न्यूक्लियंस सरफेस पे है उसको निकालना इजी है या जो वॉल्यूम पर है उसको निकालना इजी है? जो सरफेस पे होंगे। एग्जैक्टली अब देखो कैसे इसको करोगे, जज करोगे दैट सरफेस पे जो होगी इसको निकालना बहुत इजी है. हाउ विल अंडरस्टैंड दैट? एनी आइडिया? अट्रैक्टिव फोर्स सबसे पहला एक सब्ट्रैक्ट कम करो। सरफेस पे लगा हुआ है। हाँ देखो इस तरह से आप जज कर सकते हो, कोई एक न्यूक्लियन सरफेस पे है, सो दे आर कनेक्टिंग विथ देयर नाइबर, हाँ दे आर कनेक्टिंग विथ देयर नाइबर. अगर मैं मिडिल वाला कोई लेता हूँ तो कितने बॉन्ड में कनेक्ट है इस न्यूक्लियंस? तो दिस न्यूक्लियंस इज इंटरेक्टिंग विद देयर नाइबर, राइट? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जो होती है शॉर्ट रेंज होती है. तो जो न्यूक्लियंस आपका सरफेस पे है, दिस न्यूक्लियन इज इंटरेक्टिंग विद दिस न्यूक्लियंस, with this nucleons ना. other जो nucleons है they are actually at far distance, so that interaction force will be negligible. तो इसमें कितना नाइबर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, 1 2 3, यानी मैं ये कह सकता हूँ ये जो न्यूक्लियन है 3 बॉन्ड से कनेक्ट है, ये मैं कह सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. कह सकता हूँ. अब जरा जो इनसाइड है उसको देखो कितना से कनेक्ट होगी. They'll be connected with this neighbor, with this neighbor, with this neighbor, with this number. कितना बॉन्ड से कनेक्ट है? 4. आई मीन 4 ज्यादा कितना, है। बहुत ज्यादा है. देखो ये वाला भी है, ये वाला भी है. तो Yes. जो ज्यादा बॉन्ड से कनेक्ट है ना, उसको निकालना इजी है या जो कम बॉन्ड से कनेक्ट है उसको निकालना इजी? जो कम बॉन्ड में जो उसको कम निकालना बॉन्ड से easy कनेक्ट है। है. Yes. So that's why the nucleons locating on the surface, they have few neighbors or they are connected with few neighbors. As a result, it is very easy to remove that surface nucleons. However, it is very difficult to remove the nucleons that is located well inside the nucleus. ठीक है ना? अब बताओ कोई न्यूक्लियस, इसका मतलब क्या हुआ है कि जो आपका सरफेस न्यूक्लियस है, द न्यूक्लियस दैट इज लोकेटिंग ऑन द सरफेस ऑफ दिस न्यूक्लियस, ये आपका जितना ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑन द सरफेस पे होगी, न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी उतना ही कम करेगी. क्योंकि भाई वो तो इजीली आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हो ना. जो न्यूक्लियस आपका सरफेस पे है आप उसको बहुत आसानी से निकाल सकते हो. तो मैं कह सकता हूँ कि सरफेस न्यूक्लियस इज एक्चुअली डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस. क्योंकि जितना ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियस सरफेस पे होगी उतना बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगी. कह सकता हूँ ना सरफेस मैं ये कह सकता हूँ कि सरफेस न्यूक्लियन इज एक्चुअली डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस, क्योंकि सरफेस न्यूक्लियस इज लूजली कनेक्ट है ना. तो जब हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं हम टोटल न्यूक्लियस की बात करेंगे ना, तो जितना ज्यादा न्यूक्लियस सरफेस पे होगी उतना ही देयर विल बी रिडक्शन इन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ योर न्यूक्लियस. सो आई कैन से द surface nucleus is actually decreasing the binding energy. So I can say that surface energy ES will be proportional to the number of nucleons on the surface of nucleus. कितना क्लियर है? Yes, ओके. एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ऑन द सरफेस किसके ऊपर डिपेंड करती है?
सरफेस ये आपका सपोज मान एग्जैक्टली डिपेंड्स अपॉन व्हाट सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है ना। अब इस वे में भी कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज मान लो कि टोटल इसका सरफेस एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर 4 pi r square will be the surface area. So 4 pi r naught square a the power 2/3, ठीक है ना। और इसको अगर एक न्यूक्लियस की सरफेस से डिवाइड एक न्यूक्लियस की सरफेस एरिया से डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना, एक न्यूक्लियस की सरफेस से डिवाइड कर दोगे तो अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑन द सरफेस। यस सर So you have a, this is the surface area of your nucleus. If you divide the surface area of a nucleon, एक न्यूक्लियन की सरफेस एरिया कितना हो जाएगी? This will be the surface area of a nucleon. So if you divide the total surface area of a nucleus divided by surface area of a nucleon, एक का मतलब क्या हुआ? एक न्यूक्लियन की बात चल रही है, तो टोटल सरफेस एरिया से अगर सरफेस एरिया ऑफ ए न्यूक्लियन इफ यू डिवाइड, यू विल गेट approximately the number of nucleons on the surface. Approximately, I am not saying exact. तो देखो ये आपका कैंसिल हो जाएगी, ये आपका कैंसिल हो जाएगी, and that number of nucleons on the surface that depends upon basically mass number. So I can say that ES will be some constant a s into a the power 2/3. Why I am using minus here? Why I am using minus? Sir, Aji? So, because it is reducing the binding energy. Exactly. It will actually is the surface energy decreasing the binding energy. That's what I am using minus sign here. Someone was asking some question. sir, one is for that proton and neutron, that nuclear ना. Aji? सर ये वन स्केयर न्यूक्लियन लिया ना हमने On? वन एक ही जगह वन है जो मास नंबर एक है एक न्यूक्लियन की बात चल रही है ना। ओके Total surface area divided by surface area of a nucleon, that will provide you the number, approximately the number of nucleon on the surface, and that I can see that depends upon the mass number. अब बताओ मेरे को, सपोज मान लो आपके पास एक आपका सपोज मान लो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है और एक आपका सपोज मान लो आपका बोरोन का न्यूक्लियस है, किसमें सरफेस न्यूक्लियस ज्यादा होगी? I'm asking, suppose you have a boron nucleus and you have a oxygen, किसमें ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियन सरफेस पे होगी बताओ? तो जिसका ए ज्यादा है, ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा, राइट? यस सर, ऑक्सीजन। हाँ, यस ठीक है ना। So that minus is basically representing there's a reduction in binding energy causes that surface nucleons. So that's what we are using minus here. So there is a discovery of second term. They combined this first and second terms and they tried to calculate the mass or nuclear mass, and they tried to compare with experimental result, but again the obtained value of nuclear mass is actually smaller than the experimental values. Then they discovered third term, and that is called basically Coulomb energy term. That is called basically Coulomb. This writing is not good. That is your Coulomb energy term. Coulomb energy term. That is your E, basically EC. Okay, na? So what is Coulomb energy term and why it is basically came? Anyone? Why this term came? सर दैट repulsion force due to repulsion Of course. The logic behind this Coulomb energy term
that you have a nucleus. Inside nucleus there is a positively charged proton. So that proton are actually, there's a between proton you have a Coulomb repulsive force, and that is basically disruptive force that basically decreasing the binding energy of your nucleus. So this Coulomb energy term is arising because of Coulomb repulsive force. In that Coulomb energy term, we have assumed that nucleus is uniformly charged sphere. Uniformly charged sphere. And suppose you have a charged sphere having radius r. Charged sphere having radius r. Can you tell me what will be the electric field inside? Sorry, suppose you have a total charge in this sphere. Suppose total charge in this sphere is q and radius is r. Can you tell me the electric field inside this sphere is how much? कितना होती है? R is the distance from the center of the nucleus. Rho r by 3 epsilon naught. Rho r by 3 epsilon naught, absolutely correct. In terms of charge, so rho r by 3 epsilon naught, that is in terms of charge. So that will be q r by 4 pi epsilon naught r cube, right? And this is Yes, true when r is smaller than r, right? And you have electric field outside किस तरह की होती है? That is q by 4 pi epsilon naught r square. That is true when r is greater than r. ठीक है ना? So first of all, they assume that nucleus is having uniformly charged sphere, and they define that electric field inside that sphere and outside that sphere. Okay. And you know, for continuous charge distribution, what is the electrostatic energy, right? Yes. That I can define. So that they have defined that Coulomb energy, that is minus of electrostatic energy. Hello, sir. Aji. So can you please repeat the last line? My network was weak. So what I'm saying, so first they compared that, I mean, nucleus as a uniformly charged sphere. They defined that electric field inside the nucleus and outside the nucleus. And you know that for continuous charge distribution, continuously charged sphere, है ना, continuous जब आपका कोई charge sphere होती है ना, उसका electrostatic energy कितना होती है? Sir, minus 3 by 20 q square upon epsilon 4 pi epsilon naught. I think that like you have a 1 by 4 pi epsilon naught, then 3 q square by 5r, right? Yes, sir. So, but we can calculate. So, if you know that electric field for a continuous charge distribution, you can calculate that electrostatic energy. And I have defined that Coulomb energy is minus electrostatic energy. Why? Because this electrostatic energy is actually reducing that binding energy. That's what I am using, that minus sign. Right. And what is electrostatic energy for continuous charge distribution? That I can represent. That will be your minus. ये कितना जाएगी? Epsilon by 2. क्या होती है? Epsilon by 2. Then all So 0 space. to infinity. All Yes, space, right? All space E square d tau. So this is the electrostatic energy of continuously charge distributed sphere. And I have used this Coulomb energy term with minus u, because this is actually Coulomb energy reducing the binding energy of a nucleus because of disruptive nature. Now I can calculate this E square d tau, right? You people have done in electromagnetic theory. D tau यहाँ पे क्या है? Volume element है, right? Of sphere.
ठीक है ना. So just I'll calculate that. EC will be how much? That will be minus epsilon by 2, and then you will have from 0 to capital R E square d tau. E क्या है यहाँ पे, है ना. तो हम बेसिकली इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर है दैट इज डिसकंटिन्यूअस अराउंड द सरफेस ऑफ योर न्यूक्लियस. फ्रॉम 0 to R द वेरिएशन विल बी लाइक यू विल हैव E in का स्क्वायर डी टाउ. डी टाउ कितना होती है बाद में लिख लेंगे, है ना. देन फ्रॉम R to infinity यू विल हैव E आउट का स्क्वायर डी टाउ. ठीक है ना. आप लोगों ने किया हो, सब लोगों ने, किसी ने नहीं किया ऐसा कोई है यहाँ पे? Is there anyone who have not done this? Yes, sir. आपने नहीं किया. ओके ओके No. ओके. तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो विल हैव E in that is sorry Coulomb energy EC that will be minus epsilon by 2, and then you will have 0 to infinity 0 to R E in कितना है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दैट इज QR by 4 pi epsilon naught R cube का स्क्वायर डी टाउ मीन्स वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ स्फीयर दैट इज R square sin theta dr d theta d phi, and then second term is R to infinity the electric field outside of the sphere, and that will be how much? Q by 4 pi epsilon naught. Q by 4 pi epsilon naught R square whole square, and then you will have R square sin theta dr d theta and d phi. So that is not possible. I'll write here. I'll write here. We'll have here R to infinity Q by 4 pi epsilon naught R square whole square R square sin theta dr d theta and d phi. ठीक है ना. And then you'll have epsilon by 2. ठीक है ना. यहाँ पे साइन थीटा देखो, साइन थीटा डी थीटा डी फाई, इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या मिलेगा? साइन थीटा का लिमिट क्या है? थीटा डी थीटा का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 to पाई. हाँ 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा कितना मिलेगा आपको? 2 मिलेगी, राइट. एंड यू हैव अ डी फाई का कहाँ से कहाँ तक है? 0 to Pi. दैट विल गिव यू 4 पाई. डी थीटा और डी फाई का इंटीग्रेशन करोगे रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? 4 पाई मिलेगा. इस टर्म में भी मिलेगा, इस टर्म में भी मिलेगा. नहीं देखो इस टर्म में भी तो है sin theta d theta d phi, so that will be constant some number, so I can bring that 4 pi है ना outside. अब देखो यहाँ पे देखो इस टर्म में भी ये कॉमन है 4 by epsilon naught का स्क्वायर, इस टर्म में भी ये कॉमन है 4 pi epsilon naught का स्क्वायर, so you can bring that also 4 pi epsilon naught का स्क्वायर. ठीक है ना. and then you will have integration also. और क्या कॉमन है आपका? देखो क्यू स्क्वायर कॉमन है, क्यू भी कॉमन है, राइट. क्यू स्क्वायर. अब अगर इंटीग्रेट करोगे आपका 0 to R, इस टर्म में क्या बचा है? अब देखो जरा. So first of all 4 pi will be common from both term. I bought 4 pi common. Q square will be common. Q square I have taken common. 4 pi epsilon naught का square it is common from both term. 4 pi epsilon naught I have taken. अब बचा क्या है? इस टर्म में क्या बचा है? 1 by r cube का होल स्क्वायर मीन्स at the power 6. ठीक है ना. अब यहाँ पे क्या है? r square at the power 4 dr. ठीक है ना. इस टर्म में क्या बचा है? we'll have r to infinity R square. you have 1 by r square 1 by means R4. 1 by 1 by r4 r square means 1 by r square dr. ठीक है ना. इसको अगर कैलकुलेट करोगे यहाँ से क्या मिलेगा आपको? देखो
r⁵ सर हम्म सर R4 कैसे लिखा सर आपने? r4 r Yes, sir. स्क्वायर है, यहाँ पे r² है और r² यहाँ पे है Oh yes. Okay. है ना। नाउ r⁵ है ना, इसका इंडिकेशन जब करोगे r⁵ और फिर लिमिट बैठाओगे तो कैपिटल r⁵ और नीचे क्या है आपका r⁵ है, r⁵ और नीचे r⁵ है, तो फिर क्या मिलेगा यहाँ से आपको ये मिलेगा 1/r 1/5r। और यहाँ से क्या मिलेगी, यहाँ से देखो -1/r और अपर लिमिट बैठाओगे 0 मिल जाएगा, देन माइनस ऑफ -1/r दैट विल गिव यू +1/r। ठीक है ना, चेक कर लेना। ठीक है ना, फिर यहाँ से देखो क्या कैंसिल हो गया आपका, एक आप तो 4π कैंसिल हो जाएगी राइट, और एक आपका ε0 भी कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे क्या बचा रहेगी आपका 1/4πε0। So if you basically calculate, you will get -1/8πε0 then q², और ये कितना आ जाएगी 4/5 राइट, 6/5r। ठीक है ना, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी आपका 3 और आपका कितना हो जाएगी, हाँ सॉरी 8π है आपका, तो 3 और आपके हो जाएगी 4। तो बेसिकली विल गेट -1/4πε0 देन 3q²/5r। और q जो है न्यूक्लियस में कितना चार्ज है, Ze का चार्ज है ना। सो फ्रॉम हियर टुमारो आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, आई विल डिस्कस, है ना, यहाँ से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो Thank you, sir. Thank you, sir. okay. Thank you, sir. Okay, from tomorrow I cannot take class. I'm going to hometown. Okay, happy Holi to all. Same to you, sir.